And in this lecture, we'll talk about callback health. So callback health are mostly a design problem in asynchronous programming. But before talking about callback health, हम थोड़ा callback functions के बारे में बात करते हैं. We have already talked about callback functions a lot. We have used callback functions a lot. So callback functions basically are functions which we pass as parameters to other functions. जिसमें मान लो मेरे पास कोई asynchronous operation है. तो asynchronous operation मतलब क्या? मतलब there is something that will happen after some amount of time and my program is not waiting for it. So what will happen after some amount of time? That what is the callback function? So we have to define. Like for example, we use set timeout. We use set intervals. So in set timeouts and set intervals, along with the timeout, we used to also pass a function. So that function is a callback function. Why is that a callback function? Because after that given amount of time, we are asking JavaScript to go and execute that function. जाके उस function को execute करो, right? So this is how JavaScript actually achieves asynchronous programming with the help of callback functions. अब इसका एक एग्जांपल कैसे लेते हैं? अब मान लो मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ const sum function equals to, now this will take a callback function, and what I will do, I am saying that set timeout after some amount of time, run this callback function, and this callback function, let's say, takes an array of integers, and after 1 second it will do, and then I will define a callback function. Suppose I want to add all the numbers in an array. So how can I write this? Let sum equals to 0, and then I can do very basic simple for loop, I less than arr dot length I plus plus, and I can do a sum equals to sum plus arr of I, and then I can return the sum, or I can just do log of sum, whatever you want. So now if I call this sum function, I need to pass this add function as the callback function. So I passed this add function as the callback function. So this is my asynchronous operation. This sum function is my asynchronous operation. ये मेरा asynchronous operation है, सही, जो कि 1 सेकंड बाद होगा. अब ये 1 सेकंड बाद इसको क्या करना है? जो भी मैं कॉलबैक फंक्शन यहाँ पे पास कर रहा हूँ उसको 1 सेकंड बाद वो करना है. So how did I achieve the asynchronous programming? With the help of this callback function. So now if I run this program, after 1 second it will give me the desired sum, which is 11. 2 plus 4, 6 plus 5 equals to 11. So this is what callback functions are. Okay, it's simply the functions that we pass as parameters to the other function in order to achieve asynchronous programming in JavaScript. Now let's talk about callback hell. अब callback hell क्या होता है? So ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था, लेकिन ऐसा कुछ हो ही सकता है ना कि मेरे को मल्टीपल कॉलबैक्स चाहिए. मतलब मेरे पास देयर आर सीरीज ऑफ ऑपरेशंस व्हिच आर हैपनिंग. मतलब मान लो मेरे को, फॉर एग्जांपल, मुझे बाजार जाना है. आई नीड टू गो टू द मार्केट. नाउ इफ आई गो टू द मार्केट, देन आई विल बाय थिंग्स. नाउ वंस आई बाय थिंग्स, देन आई विल पे द मनी. वंस आई पे द मनी, आई विल take my vehicle. Once I take my vehicle, I will reach home. So these are all, there can be series of nested operations in JavaScript asynchronous programming also, कि भाई ये होने पे ये होगा, ये होने पे फिर ये होगा, ये होने पे फिर ये होगा. Okay, so ये बहुत सारे ऐसे नेस्टिंग हो सकते हैं. And these nesting of callback functions are referred to or is referred to as callback hell. तो ये कोई गलत कोड नहीं लिख रहे हो तुम. What you are basically making is you are making the structure of the code very difficult to read. You are making the structure of the code very difficult to debug and maintain. ठीक है, तुम अगर एक कॉल बैक के अंदर दूसरे कॉल बैक के अंदर दूसरे कॉल बैक के अंदर दूसरे कॉल बैक ऐसा डालते रहोगे, सो योर कोड विल बी वेरी मेसी. ओके, अब इसको एक थोड़ा एग्जांपल लेते हैं. अब इसको थोड़ा समझते हैं. मान लो बेसिकली मैं क्या करूं, मेरे पास यहाँ पे एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है. ठीक है,
I have an asynchronous operation here, okay, and this asynchronous operation takes one callback function, which is some result. Okay, this is some result. Okay, and now I have one more asynchronous operation. I have one more asynchronous operation. Let's say asynchronous operation 2. I have one more asynchronous operation. Okay, and this takes the result of this first asynchronous operation, whatever result came here. Okay, whatever result came here, and it takes another callback function. It takes another callback function. Okay, now suppose I have one more asynchronous operation. I have one more asynchronous operation inside this block. Okay, this takes this result and one more callback function. So this can go on and on, right? This can go on and on. This can go on and on. So what this is basically called as callback hell. मैं एक के बाद एक किए जा रहा हूँ. I am keeping on doing one after the other. कि this will call this like I am passing so many callback functions. तो ऐसे सिचुएशंस में हम इनको कॉलबैक ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है दिस इज बेसिकली अ कॉलबैक हेल. आई एम पासिंग मतलब मेरा पहले एसिंक ऑपरेशन का कॉलबैक फंक्शन इज इटसेल्फ एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन. ओके एंड दिस माइट हैपन. तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंपल से एग्जांपल लूं, मान लो मेरे पास पहला एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है. ओके आई विल क्विकली राइट समथिंग. आई हैव एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन 1. ओके हियर आई विल डू समथिंग कॉल्ड एज set timeout. Set timeout. And what I will do is I will run a callback function from here, callback function from here, and I need to pass this callback function here as well. Okay, and here I will log something, log say async operation 1 is done, ऐसा कुछ लिखता है. ठीक है, और इसको हम चलाएंगे आफ्टर अ सेकेंड. तो एसिंक्रोनस बना दिया इसको. ऐसे करके दो और बनाते, 2 3 2 3. So I have 3 asynchronous operations. Okay, सब में हम कॉल बैक लेते हैं. ठीक है, अभी हम क्या करते हैं आई एम सेइंग कि ऑन कंप्लीशन ऑफ एसिंक ऑपरेशन, ऑन कंप्लीशन ऑफ एसिंक ऑपरेशन 1 और एसिंक फंक्शन 1, आई विल कॉल, आई एम पासिंग द कॉल बैक फंक्शन एज एसिंक ऑपरेशन 2, एज एसिंक ऑपरेशन 2, कि मेरा ऑपरेशन 1 कंप्लीट होने पर ऑपरेशन 2 कॉल करो. Once my operation 1 is completed, you will call operation 2, and once my operation 2 is completed, call operation 3, and once my operation 3 is completed, then I am passing one more function into it where I am saying, hey buddy, all callback or all async operations are completed. All async operations are completed. So what I'm basically doing here कि मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा पहला एसिंक ऑपरेशन के खत्म होने पे मेरे को दूसरा एसिंक ऑपरेशन करना है, उस दूसरा एसिंक ऑपरेशन के खत्म होने पे मेरे को तीसरा एसिंक ऑपरेशन करना है, और सारे खत्म हो जाने के बाद आई विल प्रिंट ऑल एसिंक ऑपरेशंस आर कंप्लीटेड. इज दिस कोड रॉन्ग? टेक्निकली दिस कोड इज नॉट रॉन्ग. ओके, टेक्निकली दिस कोड इज नॉट रॉन्ग. यहाँ पे हर जगह पे 3 एंड आई नीड टू डू हियर 2. टेक्निकली दिस कोड इज नॉट रॉन्ग, बट ये जो तुम इस जगह को थोड़ा पढ़ो, दिस इज नॉट रीडेबल, राइट? दिस इज नॉट वेरी रीडेबल. अब मान लो मैंने यहाँ पे 3 लिया है, ऐसा इन रियल लाइफ सिनेरियोज एक एपीआई के कॉल होने पे बहुत कुछ हो सकता है. ओके, व्हेन आई एम कॉलिंग एन एपीआई आई कैन डू मल्टीपल थिंग्स. कि मेरे को एपीआई से रिस्पांस मिला, वो रिस्पांस मिलने के बाद मैं कन्वर्शन करता हूँ, वो कन्वर्ट करने के बाद मैं वैलिडेशंस करता हूँ, वो वैलिडेशंस करने के बाद मैं उस डेटा को कहीं और भेजता हूँ. ओके, सो इट कैन क्रिएट अ चेन ऑफ एसिंक्रोनस ऑपरेशंस. Okay, so this is what creates a callback hell. These are all nested callbacks, and it's a bad practice because it makes your code look very dirty, unclean, and not too much of readability is there in your code. तो डिबगिंग के टाइम पे तुमको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा देखने में ये थोड़ा अजीब तो लग रहा है. ठीक है ना? तो इसे इसे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिरामिड ऑफ डूम. ये तुम अगर ये वाइट वाले लाइंस देखोगे ना, सो दिस क्रिएट्स अ पिरामिड. This creates a pyramid kind of structure. So this is also called as pyramid of doom. Okay. So callback hells को हम callback hells basically क्या हो गया? Long nested callback loops. Okay. अब बहुत लंबा लंबा callback के ऐसे loops चले जा रहे हैं, उसको हम callback hells बोलते हैं.
Okay, and this is something that you should try to avoid while writing good program. And इसको avoid करने के लिए JavaScript also provides us a concept of promises. Okay, so what promises are that we will see in the next lecture, but for now that's it, and I'll see you in the next one. Thank you. Bye bye.